हेलो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला है कि ज्वेलरी शॉप का जीएसटी इनवॉइस इन एक्सेल 3% टैक्स के वाले। तो फर्स्ट हम एक्सेल ओपन करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यू कैन सी फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारा इनवॉइस किस फॉर्मेट में आने का। मैं आपको आज A4 साइज फॉर्मेट का इनवॉइस बताना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सेल A4 साइज फॉर्मेट एक्सपोर्ट करता है। तो इसके लिए मैं आपको मार्जिन देना पड़ता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट पैट्रॉइड का मतलब ऐसा रहता है। लैंडस्केप का मतलब ऐसा रहता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। सो ये पैट्रॉइड साइज में है। सो गो टू पेज लेआउट, मार्जिन्स एंड नैरो मार्जिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इनवॉइस ये फॉर्मेट में है। यहाँ पर देख सकते हैं ये A4 साइज का फॉर्मेट है। सो इतने के अंदर हम अभी इनवॉइस बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये जगह मैं अभी हमारा लोगों के लिए करना चाहता हूँ। सो आई मेक इट फास्ट। मच सेल्स, ये लोगों के लिए है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो, एंड यहाँ पर आता है हमारा नाम और एड्रेस। यहाँ पर मच सेल्स इंटैक्ट ज्वेलरी। सो ये ज्वेलरी है। थोड़ा इसका साइज बढ़ाता हूँ मैं, और यहाँ पर देता हूँ मैं एड्रेस। इसको भी मर्ज कर देता हूँ सेल्स, यहाँ तक मर्ज सेल्स। ऑल राइट। शॉप नंबर 16-26 ULONY सिकंदराबाद 87। सो ये हो गया हमारा एड्रेस। सो यहाँ पर दे देंगे हमारा फ़ोन नंबर, मच सेल्स। सो ऐसा लिख सकते हैं, फ़ोन। ये सेल्स पे मर्ज करके यहाँ पर आप नंबर दे सकते हैं 8 1 2 3 4 5 9। तो ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपका यह फ़ोन नंबर ऐसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा बोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं बाद में आपको लोगो बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम मार्जिन दे देंगे कि कोई बात नहीं, आप ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पर ये दो फील्ड जो है, ये आपको हम डेट के लिए यूज़ करेंगे, और यहाँ पर कस्टमर नेम एड्रेस के लिए यूज़ करेंगे। तो आई मेक दिस बिलो अंडरलाइन। सो यहाँ तक है। यहाँ पर हो गया हमारा डेट। सॉरी, यहाँ पर हम डाल सकते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, राइट। एंड ये दो हम मर्ज करेंगे। ये होगा हमारा इनवॉइस डेट। मैं ये दो फील्ड्स को राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ। या राइट, यहाँ पर हमारा डेट आ जाता है।
merge cells. For example, invoice number 001 and डेट होगा आज का डेट 04/07/2001 sorry 2018. So I'll make this format. I'll just change the date format, cell format, cell, just general. 07/04/2018. Copy. So I'll just format this cell. Format cell number, special text 04 ऐसा भी लिख सकते हैं 07/2018 राइट. इसको भी टेक्स्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर 18. सो इसको भी टेक्स्ट करेंगे. फॉर्मेट सेल्स जनरल टेक्स्ट ओके 001. सो ये हो गया हमारा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट. सो बिलिंग टू, यहाँ पर 2 ऑर्डर्स डालेंगे 2 कॉमा. सो पार्टी का नाम यहाँ पर आ जाएगा हमारा मर्ज सेल 2. सो जैन ज्वेलर्स, इसको और आप लिख सकते हैं पॉट मार्केट. तो इसका हम डाल देंगे लेफ्ट अलाइनमेंट. सो ये होगा हमारा 2 और यहाँ पर होगा कस्टमर का बिलिंग एड्रेस. इतना दे सकते हैं हम लोग. मर्ज सेंटर एंड लाइन रैप ओके. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चिलखलगुड़ा प्लाट नंबर 24 प्लाट नंबर 24 चिलखलगुड़ा सिकंदराबाद. सो लाइन wrap 1 सेकेंड. यहाँ पर है wrap text लाइक दिस एंड हो गया. ये हमारा कस्टमर का एड्रेस भी डाल सकते हैं हम लोग ऐसा. तो इसके लिए सो बिलिंग टू एड्रेस ये मार्केट, ये हो गया हमारा बिलिंग एड्रेस. सो विल गो फॉर द डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स नाउ. तो हम लोग अभी जाएंगे कि प्रोडक्ट डिटेल्स, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रेट, quantity and amount. So this will be serial number. So I just don't want to make this line. I'll just remove it. No border. From here I'll start. So this will be my SL number and यहाँ पर होता है हमारा product description. I'll merge the cells, merge description and here it will be UOM, which is unit of measurements, and this will be
per gram rate. So I'll just increase the size and decrease, मर्ज कर देता हूँ मर्ज सेंटर per gram and rate much RUT rate and any remarks. So this will be total. सॉरी रेट के पहले और एक छोटा काम, ये पर ग्राम का मैं मर्ज निकाल देता हूँ. 1 second. So this will be per gram. Okay, and this will be rate. Rate and tax, or else you can say GST and total. ऐसा होगा. तो इसके लिए मैं ये टोटल को लास्ट में डाल देता हूँ. टोटल. So GST also will be in the same way. So इंक्लूडिंग GST का एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं. आप रेट डाल देता हूँ. सॉरी, I'll cut and paste it. Now पर ग्राम है, ये रेट के थोड़ा मर्ज कर लेता हूँ, पर ग्राम भी मर्ज कर लेता हूँ. तो I'll show you the calculation. So this I will give from नीचे से लेके ये लाइन जो है ना यहाँ तक मैं आपको 36 example. So I will just border it for my understanding. Top border, where is it? Yeah. So यहाँ ये प्लेस तक मैं यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस यूज करता हूँ. तो यहाँ तक मुझे मिलेगा कि हाउ कैन आई डू द वर्क्स. We'll see just the page layout here first of all. Page, oh it's a letter, I'll just go for A4 size. So now you'll get the exact one. So now the paper is set to A4, so that means this is correct. Now I'll just make some lines. तो मुझे यहाँ तक चांस मिलेगा कि मैं पेपर्स बना सकूं. सॉरी, या सो borders, box borders, but I will not make it like this. ये दोनों का भी निकाल लेता हूँ. border none, sorry, I should merge these cells, right? merge center. तो ये डिस्क्रिप्शन का मतलब हमारा प्रोडक्ट है. so per gram I'll merge this also, merge and rate, merge it and GST and total. So I just don't want to show, I'll just remove the lines now. Just left and right lines. So more borders, up down, yeah, this is okay for me. First I have to remove this border, sorry, I have to no border, पहले नो बॉर्डर रखेंगे. तो इसके बाद मैं करता हूँ the custom border, this one and only this one. Got it. Now I'll do the same thing to this UM also. I'll first remove the border and add the outside border. So this is done.
sorry, merge across. Okay, I just want to make it merge across. Just now it was something else, so this is correct now. Yeah, so I'll do the same thing for this also. No border, and what would I say, round border. Got it. So this is the total value. Don't worry, I'll decrease and increase the sizes later, but first we'll concentrate on the calculation part. Calculation part में sorry, we'll concentrate on the calculation. So ये भी हो गया, तो इसके लिए मैं ये थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, इसका भी साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये टोटल का साइज बढ़ाता हूँ, राइट. So okay, we can increase this if you wanted to. GST के लिए इतना बस है काफी. तो ये हो गया. तो नीचे हम डालेंगे द टोटल वैल्यूज. यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि CGST SGST. सो ये टैक्स क्या है, तो हम यहाँ से डाल सकते हैं कि 1.5%, 1.5%, 1.5%, ताकि ये 3% का टैक्स है. सो हमारा कैलकुलेशन भी 3% का रहेगा. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल्स. सो मर्ज अक्रॉस एंड मर्ज अक्रॉस. सो यहाँ पर एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल नेट अमाउंट. नेट अमाउंट. सो ये भी होगा हमारा मर्ज अक्रॉस. एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा E and OE. इसका थोड़ा साइज छोटा करेंगे और राइट अलाइनमेंट. सो बाय डिफॉल्ट इसमें मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ कि 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0. कोई बात नहीं. तो या लेफ्ट साइड में हम डाल सकते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन और बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं. सो हियर आई विल यूज द सिग्नेचर के लिए यूज करता हूँ for so and so the company name whatever we have taken, so that will come here. Merge center, right alignment. So आपका शॉप का नाम यहाँ पर आ जाएगा. सिग्नेचर के ये दूसरा लाइन में डालेंगे. ये बहुत अच्छा हो गया. तो यहाँ पर हमारा सिग्नेचर होता है. यहाँ पर होता है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस. मर्चेंट सेंटर, टर्म्स एंड कंडीशंस. Okay, so I'll write one point here which I remember regularly. Goods once sold will not be returned back. ओके, ये एक हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन. ये लेफ्ट अलाइनमेंट का है. ये टर्म्स एंड कंडीशन बोल्ड में लिखेंगे. ओके, एंड और एक सेंटेंस भी लिखेंगे.
and margin center, um, subject to Hyderabad jurisdiction, JURDICTION Hyderabad jurisdiction। ऐसा डालते हैं, मैं काफ़ी इनवॉइस में देखा है ऐसा, तो मैं लिख ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा इनवॉइस। यहाँ पर डाल सकते हैं आपका बैंक डिटेल्स। सो मच सेल्स, सो यहाँ पर मैं ये बोल्ड में डालने का, बोल्ड, ये भी बोल्ड, राइट। सो यहाँ पर हमारा सिग्नेचर आ जाए फॉर, काफ़ी दूर हो गया यार, यहाँ पर नहीं देख सकता फॉर, I'll remove this. So I'll write the bank, merge across. So I'll write the bank name, and IFSC code, bank branch, and type, कुछ भी डाल सकते हैं, सॉरी इसका ज़रूरत नहीं है। So merge across, so type, थोड़ा ये राइट अलाइनमेंट करता हूँ, where is right, 1 2 okay, I'll just, for now I'll leave it off, but to make it perfect I am doing this all things. राइट, सो यहाँ पर हम लोग डालेंगे द फील्ड्स, मर्ज अक्रॉस, so 130910101316, sorry, this all should be formatted to text, so format cells text, okay. And this will be NDB 1309 123 branch, या type करंट अकाउंट, समथिंग लाइक दिस। आप आपका बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं या अभी ये बोल्ड करेंगे। I'll just make it like this. So if anything is missing, we'll add it later. Okay, we'll work on the calculation part now, the best part of mine. So इसको भी करेंगे, right. So serial number will be as it is, so we don't need to worry about the serial number mostly. So I'll just pick it to 1 2 and drag it off. ये हो गया हमारा सेल, दैट मीन्स एक में हम 26 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। ऑसम। सो यहाँ पर भी हम नीचे बॉर्डर देने का, राइट। सो दिस इज परफेक्ट। सो आई वांट टू बोल्ड दिस थिंग्स, बोल्ड
and make it center if possible. This will be right alignment because it's an amount. So we'll do the calculation part now. I think this is not necessary. The serial number 226, depending on the customer numbers, he'll just add the numbers. So I'll just delete them and make it one for now. And description will be silver ring, in grams, GMS in grams. पर ग्राम कितना है, जस्ट assume 40 रुपीज. सो 1 ग्राम का रेट होगा 38 रुपीज. सो GST होगा 3%. हमको आना है टोटल. सो तक कैलकुलेशन अभी मैं ऐप करता हूँ. 40 इंटू पर ग्राम 40 है. सो कितने ग्राम्स, 40 ग्राम से रेट 38 है. सो टोटल हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी भूल गए हैं. I'll add the quantity also. So I'll just I'll remove it and I'll remove this margin center. So per gram quantity, QTY quantity, and the rate. So rate will also be right alignment, right, quantity also right. So quantity, so per gram है, एक मिनट, I'll just make the borders. Yeah, so per gram 40 है, 38 रुपीज नॉट क्वांटिटी. क्वांटिटी सोचेंगे कितना ग्राम्स का है. सो 10 ग्राम का है क्वांटिटी. सो रेट कितना है पर ग्राम का, 38 रुपीज. सो ऐसा होता है. सो यहाँ पर देख सकते हैं हम. I'll take it to notepad for now. Text document, notepad, and I'll just do the calculations here. यहाँ पर हमको CGS 40 rupees into 10 will be our value 400. 400 into 38. So this will be our 380 rupees. Sorry, not that. It's wrong. 40 into 10. So पूरा हो गया. पर ग्राम 40 है, 10 grams. Yeah, sorry for the disturbance, guys. Okay, I'm free now. So here you can see 40 rupees is per gram into 10 will give you the total grams 400. 400 rupees is total weight, and rate is 38. I'll do into 38. That will give the value. So 400 into 38 will give you the value which is gross amount. So इसके अंदर ही हमको 3% का टैक्स है. So how to do the tax? So I'll do that. तो इसके लिए हम करने हैं 15,200 into 3% will give you one value, divide by 103. So this is the tax value. What is 442.718. So I'll do these calculations now, and we will get that this is the tax value and this is the total value. Now we'll see what will happen. I'll just do this into this. Okay. So here I'll just click on this, sum this. Okay. Okay.
तो इसके लिए हम करेंगे कैलकुलेशन सम ओपन ब्रैकेट this into, where is the into symbol, into this field, close it and again make it into this field, close it off. We'll see whether the calculation is correct or not. I'll just leave it this. So 1500 is our first value. So 15200, we got the 15200 here total, and we'll just see the tax value also 3%. here 3% tax आने का है. So this divided by this into this divided by this. Okay, so we'll do this. So we'll get the net amount. First we'll do the taxes. Okay, divide by 2. So 1.5 will be is equals to sum open bracket this into J10 into 3 GST divided by 100 plus this one, close. I think it's okay. One second, I'm not sure this is correct. Close it. I'll just make it in a decimal ways. Format cells, number, decimal 2 places. Okay, one second, I'll do it. Not sure this is exactly what we're looking for. So 1500 into GST divided by 100 plus 3% gives you, 3%. Okay, so it's giving you 459, so 442 is the correct answer. Okay, so this will be the total amount divided by 2, because we are making it in half. The same formula for this also. I should do the same thing. Copy. So I'm just pasting it here. Right, 229.50, 229.50. I'll just cross check this why I'm not getting the exact value. So I'll just do this and I'll check it out. So we can do this in some other ways also. Just a second. So what I have done was exactly not the correct thing. I'll do once more. So this sum this total amount into this GST tax sum divided by 100 plus GST close divide by 2. This will also give the same value.
What's happened? Divide by 2. So I'll just close it this for here. Divided by 100. Sum j oblique 10 into 10. 1 second. I'll do this again. For now, this is this. 1 second. So total amount ये होगा हमारा ये. So this will have the same formula. Copy, sorry, and paste it here. So this will also be a decimal value. Properties, format cells, number, decimal values too. Got it. So this is our total amount. So in the next video I can show you. Now let me do anything calculation here. I'll do something like say 50 rupees per gram, and quantity will be 20, and for rate will be around 40 rupees. So you can see 15 to 20, 15 to 20 will be 1000 into 40 will give you 40,000. So the same calculations will be here also. 40,000 and 60.61, not 1.50, 6 not 1.50. So I will work on the task structure in the next video, but we'll try to add one logo also here. So insert picture, I'll just click on downloads. I'll see if I have anything. Oh, this is too big. Something like that. So I'll remove the text in this. I'll just try to print something here. And print. We'll just try to print it. Okay, we'll see how it's going to look like. I'll show you a format that gets shows. Yeah, children's, yeah. थोड़ा सा small changes करता हूँ. This is like this. We can do this like this. So right alignment अच्छा आता है. So total amount will increase the size and we'll make it bold. And we can give some underline. Need to look a little bit more good. Feel not like this. Okay, like this, and border, underline, something like this, or it's not necessary. Okay, so this will move it to some next subline. Positive, right. Now I'll try to show a print how it's going to look like in our printer. So I'll just save it. So print. So I'm printing it to my desktop. So I'm just saving. So this is a sample invoice, right? So I'll just minimize them. I'll see in my desktop how it is going to save. Where is that? Yeah, it's here, sampling. Awesome. So this is how our print is going to look like. So this is what we wanted, right?
So this is how the invoice looks like. So in the next, I'll don't worry guys, I'll share this doc on this Excel file into your in my website. You can download it from there. So thank you very much.